Good morning students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 9 reproduction in animals session number 5. Last sessions children we have discussed about reproduction, modes of reproduction, female and male reproductive organs, fertilizers, type of fertilizers, viviporous, oviporous, what is life cycle in frog. Now this is our last part of the chapter, that is asexual reproduction. In modes of reproduction we have discussed about two modes. One is sexual and second is asexual. In sexual we have discussed all the parts, we have covered all the points. Now we are going to discuss about asexual reproduction. Asexual reproduction means the type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उसमें से जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो में ग्रो होके एडल्ट बनता है. लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सिंगल सेल यूज होता है, सिंगल पेरेंट इज गिविंग बर्थ टू अ यंग वन, राइट? सो इन दिस वी आर हैविंग three types of asexual reproduction. One is budding, second is binary fission, and third is cloning. So first we will discuss about budding. Now what is budding? In this case of asexual reproduction, the organisms like hydra develops a huge bulge called bud. Now here children you can see in the diagram hydra is given. Here there is a small bird. If this bird gets cut and fall down, so here new hydra can grow from this. Now if this will form a new bird, again it can fall down and it can grow a new hydra, right? So this is called as budding. So this bird develop into an adult hydra like structure which when gets separated from the parent hydra leads independent life, right? For example, yeast, right? Here I have given you an example of yeast. Now yeast is also a single cell. When it is put in something, it starts multiplying very fast. That is called as fermentation. Fermentation में जब हम yeast को use करते हैं तो वो जो yeast होता है वो हमारे डो को डबल साइज में एक्सपांड करता है. Why? Because it is getting multiplied. Now for example lizards. जब lizards की पूंछ कट हो जाती है तो दूसरी पूंछ उधर उग जाती है, right children? Same way here in budding we are having a new bird formed in a parent cell and from parent cell a new hydra is grown. When the bird falls down, again there you can get a new hydra and like this they can multiply on and on with a single parent. Next type is binary fission. The process of reproduction in which animal reproduces by dividing into two individuals. जब एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर ही वो दो सेल में डिवाइड होते हैं. So that is known as binary fission. Example is amoeba reproduces asexually in binary fission. Now here we can see amoeba. In amoeba center we are having nucleus. अब ये जो nucleus है वो खींच के इतना खींचता है वो डिवाइड होने लगता है and from that we are getting two nucleus. और ये जो two nucleus है वो इंडिपेंडेंटली बीच में से डिवाइड होके डॉटर अमीबा बनते हैं. जब एक में से दो अमीबा बनते हैं लाइक दिस, सो टू न्यूक्लियस आर डिवाइडेड, इट इज कॉल्ड एज डॉटर अमीबा एंड हियर टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज डिवाइडिंग न्यूक्लियस. Further, this can be divided in another two. So like this type children, it can get divided and new young ones are formed. Next is cloning. It is the production of exact copy of a cell
any other living part or complete organism। अब जो क्लोनिंग होता है वो क्या होता है कि कुछ न्यू पार्ट बॉडी के अंदर से ही वो सेल लेके दूसरे सेल को बनाया जाता है और ग्रो किया जाता है, और दूसरा कोई पार्ट भी अलग से ग्रो किया जाता है ताकि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसमें दिखाई दे। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ डॉली शिप। नाउ दिस डॉली शिप वाज this dolly ship was born on 1996, right? Now what is this dolly ship? By Ian Wilmot and his colleague at Roslin Institute of Edinburgh, Scotland। अब यहाँ पे क्या किया गया था, जो शिप होती है, नई टाइप की शिप उन्होंने बनाई थी। दो शिप, एक शिप का न्यूक्लियस दिया और उसे दूसरे शिप के एग के अंदर फिट किया, और उसमें से जो न्यू टाइप ऑफ शिप निकली, इट वाज अ डॉली शिप। दिस डॉली शिप हैड अ टोटल डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ ओनली वन पेरेंट सेल। दो पेरेंट सेल में से उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सो दिस डॉली शिप लिव्ड फॉर सम इयर्स एंड शी डाइड इन 2003। So her lifespan was very less. So cloning is an artificial method invented by man to produce organisms without sexual or asexual reproduction। यानी ये एक टोटली डिफरेंट पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये टोटली डिफरेंट है, राइट? सो चिल्ड्रन, in this modern terms, modern research is children, people are taking chromosomes, they are taking DNA of some animal and they are putting into human beings, some human beings they are putting into animal, and they are doing researches. This is called as cloning. I hope children it is understood about two types of asexual reproduction, that is budding and binary fission, and here we are having cloning, which is a different type of reproduction, right? So with this we complete our session. In next session we will start with solution of this chapter. Thank you and have a nice day, children.